तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लोज में। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 21 एंड व्हाट इट टॉक अबाउट, ये किस बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 21 इज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दैट्स मीन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है किसी भी पर्सन को उसके जीवन से या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। लाइक अगर ऐसा हम कर सकते हैं, बट देयर इज अ प्रोसीजर, लॉ के द्वारा जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर है उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज हम किसी को किसी की जीवन से या उसकी पर्सनल लिबर्टी से, यानी कि उसकी जो अपनी पर्सनल अपनी जो स्वतंत्रता है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। So in India, the protection of life and personal liberty is a fundamental right granted to the citizen under Part 3 of the Constitution of India in 1950. So India में जो protection of life है और जो personal liberty है वो fundamental right में Part 3 Constitution of India 1950 के अंदर दी गई है। These fundamental rights are represent the foundation value cherished by the people and they are granted against action of the state, meaning that no act of any state authorities can violate any such right of a citizen except according to the procedure established by the law. Article 21 of this part stated that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law, and this is known as the right of the life and personal liberty. So इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर। अब इसका जो ये हम अगर बहुत बात करते हैं कि आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से, इसका इवोल्यूशन हुआ कहाँ से। द प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाज नॉट न्यू टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिफोर दे इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन फैक्ट इन द प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड मच अर्लियर इन द मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड इन 1215 and in the US Constitution 1791. And in England, it was reiterated in the Petition of Right 1628. And since then, the observance of this principle has been established, what is known as the rule of law in the UK. So UK में इसको जो जानते थे हम लोग rule of law के नाम से जानते थे. And the American also appear to have borrowed the phrase due process of law. और जो US Constitution में इसको जाना जाता है due process of law. Okay. So due process of law in the United States, which was the first used in a statute of the 14th century. However, the expression law of land used in the England and in different meaning than the due process of law used in US Constitution. So जो आपकी अगर हम लोग बात करें कि इंडिया 14th century में अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशन लॉ ऑफ लैंड, तो इंग्लैंड में हम लोग जानते थे कि लॉ ऑफ लैंड होता है, लाइक जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए जो लॉ है, एंड द डिफरेंट मीनिंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ यूज इन यूएस। और यूएस में सेम चीज के लिए वो लोग यूज करते थे, लाइक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि लॉ का प्रोसेस क्या होगा। सो यूडीएचआर अगर इसकी हम लोग बात करते हैं कि आया कहाँ से इनिशियली, सो इंटरनेशनली ऑन द ब्रॉडर लेवल द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948 रिकॉग्नाइज दिस प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1948 में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ने इसको पहचाना। आर्टिकल 3 ऑफ द डिक्लेरेशन से एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। सो उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ, लिबर्टीज एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, दिस इज ऑल दीज राइट्स, एवरी पर्सन हैव दीज राइट्स। So internationally, on the broader level, the Universal Declaration of the Human Rights 1948 recognized the principle of the first time. Article 3 of the Declaration say everyone have the right to life, liberties and security of a person. और जो आर्टिकल 3 है यूडीएचआर का, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का, स्वतंत्रता के साथ जीने का और अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। ओके, ये तीन चीजें यूडीएचआर कहता है। सो आर्टिकल 21 हम लोग अगर बात करें, इट मस्ट बी नोटेड दैट द व्हाइल द प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल 21 इज एक्सटेंडेड टू द foreigner as well as the same is the confined in the article for the life and liberty does not include the right to reside or stay in India. So अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल 21 में कि इट्स नॉट इंक्लूड राइट टू रिसाइड और स्टे इन इंडिया, सो इसके अंदर आपको इंडिया में रहने का अधिकार या यहाँ पे बसने का अधिकार नहीं है। इट हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ सर्बानंदा
Sonowal versus Union of India in 2005, that the power of the government to expel foreigners when necessary is absolute and unlimited, and there is no provision in the Indian Constitution fettering its discretion. So, ये सर्बानंदा सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में कहा कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी फॉरेनर को अपनी कंट्री से निकाल सकते हैं when necessary, जब जरूरत हो, and is absolute and unlimited, and there is no provision in the India to constitution fettering its discretion. और ऐसा कोई उनके मतलब discretion, it's entirely up to their discretion. Now we are going to discuss our first case law about under Article 21, A.K. Gopalan versus State of Madras 1950. सो इस केस में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हुई थी. हम लोग बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस की. इस केस के फैक्ट्स क्या हैं. इन दिस केस द पिटिशनर कम्युनिस्ट लीडर वाज डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950. He claimed that such detention was illegal and it's infringed upon his freedom to movement granted under Article 119 Clause 1 Subclause D of the Constitution of India, and thus also violate his personal liberty as granted by the Article 21, since freedom of movement should be considered as a part of personal liberty. So अब इसमें देख लेते हैं कि जजमेंट क्या आया. क्योंकि इसमें पिटिशनर एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनको डिटेन करके रखा गया और उन्होंने क्लेम किया कि जो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 है वो उनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, एज वेल एज आर्टिकल 19(1)D का भी वो वायलेशन करता है. सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया. द कोर्ट स्टेटेड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन लिबर्टी ऑफ द फिजिकल बॉडी एंड दस डिड नॉट इंक्लूड द राइट गिवन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1. सो उन्होंने कहा जो आपको पर्सनल लिबर्टी जो दी गई है वो आपकी फिजिकल लिबर्टी है. इसके अंदर जो आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1 लाइक आर्टिकल 21, ये अगर 19 की हम बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की यहाँ पे बात आती है. Hence, provisional liberties was considered to include some right like the right to sleep and eat, etc. So जो इसके अंदर जो इंक्लूड की गई है पर्सनल लिबर्टी के अंदर आपके राइट टू स्लीप और राइट टू ईट है. While the right to move freely was the relatively minor and was not include one of the personal liberty. और जो right to move freely in India है वो इसके कंपेयर में बहुत छोटा राइट है और उसके अंदर हम पर्सनल लिबर्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. एक गोपालन में ये बोला गया. देन देयर इज अनदर केस लॉ जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स इन 1964. सो इसमें भी पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया गया. अब देख लेते हैं व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द केस. द पिटिशनर इन दिस केस वाज एक्यूज्ड ऑफ ए डकैती बट वाज रिलीज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम. बस उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट जो एविडेंस थे वो बहुत कम थे. एंड द उत्तर प्रदेश पुलिस हैज बीन सर्विलांस ओवर हिम व्हिच इंक्लूड डोमिसाइलरी विजिट एट नाइट, पेरिडोरिकल इंक्वायरीज, वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट एंड द लाइक. The petitioner filed a writ petition challenging the constitutional validity of this state action. So जो petitioner था उसने कहा कि आप लोग मेरी जो पर्सनल नाइट में आप मेरे घर को विजिट कर रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं मेरी मूवमेंट का. सो दिस इज लाइक उसने एक रिट फाइल कर दी और उसने स्टेट के जो एक्शन था उसको यहाँ पे चैलेंज किया. ओके, सो जजमेंट क्या आया कि इट वाज हेल्ड दैट द राइट to the personal liberty constitute not only the right to be free from the restrictions placed on one's movement but also to be the free from the encroachment on one private life. So आप किसी के पर्सनल जीवन में encroachment नहीं कर सकती, विघ्न पैदा नहीं कर सकती. Thus the personal liberties was considered to include all the residual freedom of a person, not include the Article 19 subclause 1. सो खड़क सिंह में ये बात की गई कि पर्सनल लिबर्टी मतलब आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को एंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, किसी की जो पर्सनल लाइफ है उसको आप खराब नहीं कर सकते, उसकी जो पर्सनल मूवमेंट है उनको आप लाइक मॉनिटर नहीं कर सकते बिकॉज ही इज आल्सो हैव हिज पर्सनल लाइफ. सो एंड देयर इज अनदर केस लॉ, इट्स अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1978, राइट टू ट्रेवल. सो इस केस के फैक्ट देख लेते हैं. The petitioner in this case was ordered by the Regional Passport Office, Delhi, to surrender her newly made passport within 7 days due to the central government decision to impound it in public interest.
In accordance with the Passport Act 1967, upon requesting a statement of the reason for such impounding, and the government replied that they could not furnish a copy of the same in the interest of the general public. A writ petition was filed by the petitioner challenging the government decision of the impounding and also not providing the reason as well as not allowing the petitioner to defend herself. So इस केस में क्या हुआ था कि जो petitioner थी उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, एंड व्हेन शी आस्क्ड लाइक व्हाई यू डिड सो, कि आपने ऐसा क्यों किया, देन दे आर नॉट रिप्लाई कि हमने ये इसलिए किया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों ने किया है, आपका पासपोर्ट इम्पाउंड कर दिया। तो उन्होंने बोला कि यार आपने जो मेरे पास राइट है लाइक डिफेंड करने का, आपने उसको भी कर्टेल कर दिया, आपने मेरी तो आपने रीजन भी नहीं बताया और आपने मेरा राइट टू ट्रेवल जो है उसको कर्टेल कर दिया। सो नाउ शी फाइल्ड अ रिट पिटीशन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द राइट टू ट्रेवल and go to the outside of the country must be included in the right to personal liberty. It is stated that personal liberty given in Article 21 had widest aptitude and covered a variety of rights related to the personal liberties of a person, and the scope of a personal liberty was hence greatly increased, and it was held to include all the rights granted under Article 21 as well as all other right related to the personal liberties of a person. Such as right could only be restricted by a procedure established by a law which had to be fair, just and reasonable, not fanciful or oppressive or arbitrary. So आप किसी का जो ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 के अंदर पर्सनल लिबर्टी का, इसको कंट्रोल कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, बट देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ विच हैड, और जो कि फेयर होना चाहिए, जस्टफुल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और आर्बिट्री नहीं होना चाहिए. सो हैज द कोर्ट एडजुडिकेट इन दिस केस, लाइक फर्स्ट जो कोर्ट ने एडजुडिकेट किया, द गवर्नमेंट एक्शन वाज नॉट जस्टिफाइड एज देयर वाज नो pressing reason for the impounding of the petitioner's passport and it was a violation of her fundamental right, और ये उनकी फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है. And the principle of natural justice were violated as the petitioner was not given the opportunity to be here, और जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका भी वायलेशन हुआ है क्योंकि पिटिशनर को सुना ही नहीं गया, उसको सुनने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है. Since the landmark case, the court have sought to be given a wider meaning of the personal liberties. The principle of the natural justice have also been emphasized upon, and as many procedures which restrict the liberty of a person must be fair, just and reasonable. So इसमें यही सब चीजें बोली गई कि जो आपका केस है, लाइक जो पर्सन जिसको आप सुन रहे हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और जो ट्रायल होना चाहिए वो पर्सन के साथ में फेयर, जस्ट और रीजनेबल चीजें होनी चाहिए. सो अभी इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में और चीजें भी डिस्कस की है, लाइक इंटररिलेशन बिटवीन द आर्टिकल 14, 19, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 14, 19 और 21 जो तीन आर्टिकल थे उनका इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ. सो अब लाइक व्हाट वी कैन से, लाइक आर्टिकल 14, 19 and 21 is a golden triangle. Okay, Justice Bhagwati say the same thing. So firstly, let's consider Article 14 and 19 given in the Article Constitution. Article 14 talk about grant equality before the law and equal protection of the law for all the person in the Indian territory and prohibited discrimination based on the religion, race, caste, sex, place of birth. So Article 14 बात करता है कि हम लोग सबको इक्वली ट्रीट करेंगे और इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. ओके, एंड देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके धर्म के बिहाफ पे, जाति के बिहाफ पे, या फिर जेंडर के बिहाफ पे, या फिर उनके डेट ऑफ लाइक प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे कि उनका जन्म कहाँ हुआ है. सो क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 19 ग्रांट ऑल सिटीजन टू राइट टू फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, to assemble peacefully from the association, to move freely, reside anywhere throughout the country, and to practice any profession and occupation or trade. Okay, ये आर्टिकल 19 में बात की गई है कि आप कहीं पे भी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिली है, बोलने की स्वतंत्रता है, आपको असेंबल होने की स्वतंत्रता है, आपको एसोसिएट होने की स्वतंत्रता है, आप पूरे भारत में कहीं पे भी घूम सकते हैं, बस सकते हैं और कोई भी प्रैक्टिस
लाइक प्रोफेशन या बिजनेस में ट्रेड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. The Supreme Court held that the Article 19 Clause 1 and Article 21 are not mutually exclusive as the right of life and personal liberty cover a wide variety of rights, some of which has been given additional protection under Article 19 Clause 1. Okay, so this is a case मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो उसमें आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 20 के ट्रायंगल को डिस्कस किया गया कि ये तीनों लॉ के अंदर हम लोगों को चीजें इस तरह से हैं और ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई. ओके, नाउ देयर इज अनदर केस लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2014. In this case, a non-profit organization filed a petition seeking guidelines for occupational safety and health condition in various industries, especially thermal power plant. So, इस केस में एक एनजीओ ने पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप गाइडलाइन इशू करें जो आपके वर्कर हैं जो कि थर्मल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, पावर प्लांट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए. दिस वाज इन द व्यू ऑफ द वेरियस स्किन डिसीज, लंग abnormalities, etc., suffered by their worker due to the unhealthy working condition. It was called for the compensation to the victim for the occupational health disorder. और इसमें ये कहा गया कि जो compensation है victim को, वो occupational health disorder हुआ है, उनको compensation भी मिलना चाहिए. So what is the decision in Occupational Health and Safety Association versus Union of India? So Supreme Court held that Supreme Court recognized the state duty to protect worker from the dangerous and unhygienic working condition and remanded the matter to the various high court to check the issue of the thermal power plant in their respective state. Thus, in this case, the protection of health and strength of worker and their access to just and human condition of work were taken an essential condition to live with the human dignity. So, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया कि जो एसेंशियल कंडीशन है जीने के लिए वो कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ में, इज्जत के साथ में अपने जी सके, अपनी लाइफ सर्वाइव कर सके. सो द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वर्कर एंड देयर एक्सेस टू जस्ट ह्यूमन कंडीशन टू द वर्क. Okay, all these things are discussed in this case. Now, Navtesh Singh Johar versus Union of India in 2018, homosexuality. So this is a landmark case. Like Navtesh Singh Johar के बाद में आपका जो पोस्को एक्ट है और चीजें भी लाइक आपकी बाद में गवर्नमेंट ने बनाई इस चीज को देखते हुए. So in fact, in this case, the petitioner NGO filed a writ petition challenging 377 of the Indian Penal Code 1816 as it criminalized sexual act between the LGBT person, claiming that it was against the fundamental right. तो इस केस में ये क्लेम किया गया है जो LGBT कम्युनिटी है उनके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, वो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उनको क्रिमिनलाइज किया गया है और जो कि LGBT कम्युनिटी की जो फंडामेंटल राइट है उनका वॉयलेशन करते थे. सो इन दिस केस क्या जजमेंट दिया गया नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018. सो द कोर्ट applying the principle of human dignity said that section 377 violated the article 14, 15, 19 and 21 of the constitution to extend that the criminalized consensual sexual act of the adults, such that person above the age of 18 years and who are competent to consent in private and sexual act between LGBT adults conduct with the free consent to the parties involved were declared legal. और जो LGBT कम्युनिटी है उन्होंने कंसेंट के साथ में अगर पार्टी ने किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में वो इंडल्ज होते हैं देन दिस रिलेशनशिप इज लेजिट एंड लीगल. Okay, so as we can observe, human dignity is not the straitjacket idea, rather it's involve all the rights and freedom which enable a person to live life with encroachment upon his or her self-respect, pride and safety. Okay, so right to livelihood. अब right to livelihood यानी कि आजीविका का आधार अधिकार. To survive, a person required access to financial and material resources to fulfill his various needs. The law recognizes that every person, whether man or woman, has an equal right to livelihood so that he or she may acquire the necessary resources like food, water, shelter, clothes and more. No person deserves to live in poverty and squalor because of being deprived of the chance to earn for himself. और कोई भी पर्सन
लाइक नो पर्सन डिजर्व टू लिव इन पॉवर्टी, और कोई भी पर्सन गरीबी में रहना डिजर्व नहीं करता है, ओके, बिकॉज उसको जो कमाने ना दिया जाए. सो ओल्गा तेलीज एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986. अब देखते हैं इस केस में क्या हुआ. द पिटिशनर इन दिस केस वर स्लम एंड पेवमेंट डेवलपर इन द सिटी ऑफ बॉम्बे. They filed a writ petition against the earlier decision of the state of Maharashtra and Bombay Municipal Corporation of the forcibly evict dweller and deport them, which lead to the demolish of the certain dwelling. अब कुछ लोग महाराष्ट्र में बॉम्बे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको फोर्सफुली उनके घरों से निकाल दिया, डिपार्ट कर लिया, एंड जो वहां पे रहने वाले आवासी थे, विच इज लीड टू बी द डिमोलिशन ऑफ द सर्टेन डिवलिंग, और जो उन्होंने जो सर्टेन जो उनके घर थे उनको डिमोलिश कर दिया. They challenge this action on the ground that evicting a person from his pavement dwelling or some means deprive him from his right of livelihood, which should be considered as a part of the constitutional right to life. और जिसको अंडर आर्टिकल 21 कंसिडर करना चाहिए आपको, कि हर एक व्यक्ति का राइट है जीने का, रहने का, लिवलीहुड लाइक कमाने का. सो deprive him from his right to livelihood, which should be considered as a part of constitutional right to life. So judgment क्या आया ओल्गा तेलगीज एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 में. The court concluded that though the slum and pavement dweller were deprived from their right to livelihood, and the government was justified in evict them as they were making use of public property for the private purpose. So इस कोर्ट में conduct like the court conclude that the through the slum and pavement dweller were deprived of their right to livelihood, कि जो उनको राइट टू लाइवलीहुड था उनको उससे वंचित किया गया. गवर्नमेंट वाज जस्टिफाइड इन इविक्टिंग देम एज दे आर मेकिंग यूज ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी फॉर प्राइवेट पर्पस, और जो गवर्नमेंट ने उन्हें इविक्ट किया और कहा कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था. हाउएवर दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड ट्रेसपास एज दे occupy the 50 place out of sheer helplessness. It was ordered that our eviction would take place only after the approaching monsoon season, and the person who were census before 1976 would be entitled to resettlement. और जो लोग 1976 से पहले वहां पे रह रहे थे उन लोगों को resettlement किया जाएगा दूसरी जगह पे, which is the case failed to bring successful resettlement to the developer, and in fact in some times acted as justification for eviction of the people by the state. It did play its part of establishing the right to livelihood as part of the fundamental right to life. और इस केस में एस्टैब्लिश हुआ कि right to livelihood is a part of the fundamental right to life. Okay, there is another case law, Chambly Singh versus State of UP 1995. So in this case, the appellant were landowner of the land and was being acquired by the government for providing house to scheduled castes. It was contended that the appellant will be deprived of their lands, which was the only source of their livelihood, violating Article 21 of the Constitution. Okay, so देखते हैं चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ जजमेंट. So protection of life guaranteed by the Article 21 encompasses within the ambit the right to shelter to enjoy the meaning of right to life. Right to live as guaranteed in any civilized society implies the basic human right to food, water, a decent environment and education, medical care and shelter. Furthermore, the right to shelter is included within itself adequate living space, a safe and decent structure, clean and decent surrounding, sufficient light, pure air and water, electricity, sanitations, and other civics amenities like road, etc. Okay, and so as to have easy access to his daily avocation. Court held that to bring that the Dalit and tribes in the mainstream of national life by providing these facilities and opportunity to them is the duty of the state, and they are their fundamental and constitutional right. Thus, in every acquisitions by its very compulsory nature,
for the public purpose, the owner may be deprived of the land, the means of the livelihood. So, right to privacy and Aadhaar. This is a very famous case. This is a landmark judgment. One of the most important judgment related to right to privacy came in the case of the Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India 2015. This case established the right to privacy as a fundamental right guaranteed by the citizen by the Constitution. और इस केस में बोला गया कि right to privacy is a fundamental right. Okay. So Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India 2015. So let's see the fact of the case. The case was brought by the retired Karnataka High Court Justice before a 9-judge constitutional bench challenged the government scheme of making the Aadhaar card as a uniform system of biometric-based identity card for all the citizens. He claimed that it was a violation of the right to privacy, and the fact that there were no strict data protection law in India means that people's personal information could be misused. The Attorney General argued that the Constitution did not guarantee a separate right to privacy. So, judgment क्या है? The bench anonymously held that the right to privacy was a part of the one of the right to life by the Article 21 and include the right to keep personal information private. So while it's upheld the constitutional validity of the Aadhaar card is struck down certain provision of the Aadhaar targeted delivery of the financial and other subsidies, benefits and services Act 2016. So Miss Mohani Jain versus State of Karnataka and others 1992. In this case, a student of the government medical college in Karnataka was refused to admission as she could not afford to pay 60,000 capitation fee, which was charged by the student not belonging to the Karnataka. She filed a petition against this action. So इस केस में क्या हुआ था, एक स्टूडेंट थी और उसको लाइक स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट medical college in Karnataka refused to admission as she could not afford to pay 60,000 capitation fee because she is charged from the student not belongs to the Karnataka. So that means जो student Karnataka से belong नहीं करते थे उन student को capitation fees pay करनी थी, and she filed a petition against this because this is a violation of the Article 14. Okay, right to equality. So what is Miss Mohani Jain versus State of Karnataka judgment? Let's see. The court declared that it was illegal and charged capitation fee from the student under any circumstances. Moreover, it's acknowledged that the education was what ensure a life of dignity and happiness to a person and not transforming the right to education mentioned under Article 41 of the Part 4 of the Constitution into the fundamental right would defeat its purpose and also keep all existing fundamental rights beyond the reach of the literature. This is declared that right to education is a part of the fundamental right. अभी बात करते हैं दूसरा केस लो, उन्नी कृष्णन जेपी एंड अदर्स एक्सेप्टर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स. So this case के फैक्ट भी देख लेते हैं. The petition in this case was filed by the certain educational institution in Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu, challenging the decision by the court in above case in Mohani Jain versus State of Karnataka. They claimed that the person had a right to open an educational institution with a profit motive, and if the institution was self-financed, then the quantum of the fees charged by it would be the discretion of the institution and not the state. So unification JP, others and state of Andhra Pradesh and others. So it was held that the every Indian citizen has the fundamental right to education. No person can be deprived of his or her education by the state. The right to include free education until the person age 14 years of the age, and thereafter he will be depend on his or her personal economical capacity as well as of the state. It is clear that the recognition of the right to education as a fundamental right was mainly brought about by the above mentioned cases, which ultimately lead to the 86th amendment. Okay, and
this is all about it. So thanks for watching the video. If you like it, please like, comment, share, and subscribe the channel. Thank you.